अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हुई है दिन की शुरुआत कुछ अलग। मेरे साथ हुआ है थोड़ी टेंशन थोड़ी खुशी एक साथ, बट क्योंकि ये आपको पता चलेगा आगे की वीडियो में आखिर हुआ क्या है। और ये मैंने दिन की शुरुआत की है ब्रेकफास्ट से। देखें आज मैं क्या बना रही हूँ। मैं आज बना रही हूँ स्पाइसी वर्मिसेली, ठीक है। और मैं ऑलरेडी मेरा रूटीन जो होता है सुबह का वो पी चुकी हूँ। जो मेरा मॉर्निंग ड्रिंक होता है वो मैं ऑलरेडी पी चुकी हूँ। अब मैं ये भूनने लगी हूँ। इट्स अ वर्मिसेली, ठीक है। ये ऑलरेडी भुनी हुई रहती है, फिर भी मैं एक बार इसको घी में रोस्ट करूँगी। हल्का सा रोस्ट करके फिर मैं इसको पकाऊंगी। इट्स वेरी सिंपल, जल्दी बन जाती वाली चीज़ है। सो दिस इज़ हाउ वी डू इट, ठीक है। थोड़ी बड़ी बड़ी सी है, इसको मैं स्मैश करके छोटे छोटे टुकड़ों में बना दूँगी। ओके, सो देखिए ये हो गई है फ्राई। एज़ यूजुअल कल हम गए थे इवनिंग वॉक पर। ड्यूरिंग द वॉक आई जस्ट केम अक्रॉस अ पिजन, अ हर्ट पिजन, ठीक है। वो ऊपर से गिरा हुआ था ज़मीन पर। एक्चुअली ही वॉज बैडली हर्ट। उसकी दोनों आँखें ज़ख्मी हो गई थी एंड हिज विंग्स वे ऑल्सो हर्ट। और उसके सामने बैठा था एक भयानक सा खूंखार सा कैट, अ स्ट्रीट कैट वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द pigeon to like just attack him or eat him. I don't know what exactly it was, but I just picked him up, I grabbed him and got home. After doing the overall inspection of the pigeon, I just found out कि he won't survive for long. जिस तरीके से उसकी हालत थी, he was supposed to like just collapse. तो मुझे उसका डर था कि will he make for the other day at least, कल तक वो ज़िंदा रहेगा या नहीं. I was just worried for that. What I did was I just gave him some water और स्प्लिट रोस्टेड ग्राम जो होती है उसका पाउडर बना के फाइन पेस्ट बना के आई forcibly just feeded him, because it seems like he was still a baby pigeon. He was like mom fed pigeon, so he could not eat by his own. That's why what I did was like मैंने खुद ने पेस्ट बना के उसको खिलाने की कोशिश की, सो दैट एटलीस्ट ही कुड मेक फॉर हिज रिकवरी, वो रिकवर हो जाता. तो दैट्स व्हाट वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट. देखते हैं आगे चल के एटलीस्ट उसको वापस से उसकी स्ट्रेंथ वापस मिल जाए एंड ही रिकवर्स बैक. ओके, सो दिस इज़ हाउ इट इज़ कि लाइक you really feel bad when you come across all such things, especially with animals, क्योंकि वो बोल नहीं सकते. that's the main reason I feel more hurt. मैं बचपन से ऐसी हूँ कि लाइक मुझे एनिमल्स पे ज़्यादा तरस और ज़्यादा लगाव है. मेरी मॉम हमेशा कहा करती थी कि लाइक अभी भी कहती हैं कि लाइक मुझे इंसानों से ज़्यादा एनिमल्स से प्यार है. आई फील मोर फॉर द एनिमल्स. डेफिनेटली एनिमल्स आपको कभी हर्ट बैक नहीं करते. वो बेज़ुबान जानवर होते हैं. व्हाट दे कैन डू, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कुछ काटेंगे मारेंगे, बट वंस यू स्टार्ट लविंग देम दे वोंट डू एनीथिंग टू यू. इन रिटर्न दे विल गिव लव ओनली टू यू, और कभी धोखा नहीं देते. और यही चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुझे एनिमल से ज़्यादा प्यार है, ज़्यादा लगाव है. मेरे पास पहले भी बहुत सारे कैट्स हुआ करते थे. अभी भी मुझे मेरा एक एक पेट एनिमल मुझे याद है फ्रॉम माय चाइल्डहुड टिल अभी तक मेरे पास कैट्स थे. और कैट्स भी इतने थे रिसेंटली थोड़े, लाइक यू कैन से 2 years बैक मेरे पास तकरीबन थे 4 कैट्स, एडल्ट कैट्स थे, और 5 to 6 किटन्स थे जो मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे उनको मैंने गिफ्ट दे दिया. सो बिकॉज दे ऑल्सो लव्ड कैट्स. तो यही सब है. बट वंस आई मूड ओवर हियर मेरे कैट्स वगैरह मुझसे बहुत दूर हो गए, क्योंकि लाइक देयर वाज एन इशू. जबकि मैं फ़्लाई कर रही थी उनका सब कुछ पासपोर्ट वगैरह बना चुकी थी. इनफैक्ट जिस दिन फ़्लाई कर रही थी उनको मैं जब एयरपोर्ट भी लेके गई तो एक सिंगल पेपर जो मिसिंग था, जबकि मैंने पूरा टेक केयर किया था, पेपर से लेके फ़्लाइट टिकट से लेके एवरीथिंग आई हैड टेकन केयर. बट अनफॉर्चुनेटली मेरे 2 कैट्स में जो लेके आने वाली थी वो मिसिंग हो गए. और आज भी मैं मेरी कैट्स के फ़ोटोज़ को देख के याद करके रोती हूँ कि क्यों मैं आखिर उनको छोड़ के आ गई. क्यों कोशिश तो की मगर नहीं लेके आ सकी. और ये देखें, ये है हमारा मेहमान, कल रात से हमारे साथ है, हमारे घर पे है. देखें उसकी आँखें दोनों हर्ट हैं. शायद कैमरा सही नहीं दिख रहा, बट लेट मी शो यू. both eyes are hurt very badly. Okay, like he cannot open his eyes also. See, this is what I applied to him. This is a turmeric paste to heal
his injury. Okay, this is how it looks. It was really bad when he had come home, but since we applied it, थोड़ा बहुत सूख गया है. It is dried up. Let me give him some water now. अच्छे से पीता है. Nicely he drinks also. More than food he drinks water. So मैं normally इसको हर थोड़े थोड़े टाइम के बाद फीडिंग करा रही थी, स्पेशली वाटर, ताकि डिहाइड्रेट ना हो. इट्स वेरी सनी आउटसाइड, सो डिहाइड्रेट ना हो. तो this is how bad it is. Like, I hope he recovers. He have a really healthy and long life ahead. मैं सही में इसको देख के मैं बहुत बहुत परेशान हो गई हूँ कि लाइक क्या ये सर्वाइव करेगा. जिस तरीके से करता है ना, वंस आई फीड हिम, ही इज़ लाइक ओके, ही सीम्स टू बी फाइन, ही लाइक स्टैंड्स अप perfectly well, but later off, after some time again he will start dropping his neck to the ground. तभी ऐसा लगता है कि oh no, इसको कुछ हो रहा है, something will happen to him, he will not survive. This is all it comes again and again. और secondly problem is कि यहाँ पे नज़दीक कोई वैट क्लिनिक नहीं है, यहाँ पे कोई वेटनरी नहीं है नज़दीक, तो it's quite difficult for me to take him to the veterinary clinic also. Few years back, I had rescued a kitten from the street whose one eye was badly hurt and it seems to be protruded or popped out. The kitten's case was also totally complicated, though I had taken the kitten to the doctor. We had also named the kitten Gracie. Thanks to the adult cat which I had at home named Minnie, and she was on her nursing period with her own kittens, and she timely understood that the stranger kitten which I rescued from the streets also needed her badly. It was really a awesome bond between all those kittens and the rescued kitten Gracie and the mother cat. Really, the house was on the run all the time because of these kittens. They used to make the house like full of fun and like playful. It was always there was something or the other going on at home, and it was really an adorable moment. Such a awesome behavior is sometimes of the animals that we should be ashamed of what we have become. We have become so much selfish in this world that there is no humanity left within us. Like, we should learn some lessons from the animals itself. The animals' behavior is so beautiful that the bonding between the babies and the mother and the father is so much strong. They behave so differently than humans. They protect. They have much more feelings than us, I believe. This is how I'm trying to feed the poor pigeon. I'm trying to feed him the gram split powder mixed with the water, and I'm trying to feed him with my one hand. It is quite difficult though, because I needed a helping hand, but there was no one to help me. And see, this is how he's having some and he's just throwing away more of it rather than eating. But finally I was succeeded. I have fed him some of it. So after this, what I'm going to do is I'm going to give him some water so that he is not dehydrated anymore. This is how he is looking. And that's really good what he is doing. He's taking a walk at least. There is a movement. He's not dropping his neck down. But this is what he does. When he eats something, he is fine for a few minutes. Then again he will drop down the neck, which I'm afraid of. This is the closer look of the pigeon. ये ऐसा लगता है. अभी फ़िलहाल इसने खाना खाया हुआ है, तो he is looking much better than what he was. तो देखें, I hope कि कोई आके इसको तंग ना करे. Like, there are other pigeons also. See, there are other pigeons who normally come in our balcony. My daughter is sitting over here so that they should not hurt him. Once we touch any pigeon, they don't accept them back in their own community. अब होने वाला है लंच टाइम, सो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ मीट कौरमा, रेगुलर मीट कौरमा. तो मैंने पैन में ऐड कर लिया है ऑलिव ऑयल, थोड़ा बहुत ऑलिव ऑयल, जस्ट टू रोस्ट all the ingredients, like dry masala, dry dry khade masale,
ओके मैंने ऐड कर लिया है रेड चिलीज़, ड्राई रेड चिलीज़, और ये है पेपरकॉर्न्स, 1 टीस्पून ऑफ पेपरकॉर्न. Now I'm going to add some fennel seeds, that is सौंफ. फिर सौंफ के बाद मैं ऐड करूँगी जीरा, होल जीरा, क्यूमिन सीड्स. तो ये है क्यूमिन सीड्स और ये जाएंगे पैन के अंदर. और ये है साबुत धनिया, दैट इज़ कोरिएंडर, होल कोरिएंडर. और ये है सिनेमन स्टिक्स, दालचीनी, और टू दिस लौंग एंड इलायची. तो अब इन्हें हम अच्छे से भून लेंगे, रोस्ट कर लेंगे. ठीक है. सो दिस इज़ हाउ इट गोज़. ज़्यादा भूनना नहीं है, ज़्यादा जलाना नहीं है. यू हैव टू टेक केयर दैट इट डजंट बर्न आउट. तो अच्छे से स्टर करें, फिर फ्लेम भी मीडियम पे रखें. और ये है बड़ी सी अनियन, 1 होल अनियन. तो इसका बनेगा पेस्ट. मैं इसको ग्राइंड करूँगी रोस्ट करने के बाद. तो इसका बनेगा पेस्ट. तो इसको अच्छे से भून लेते हैं. This is how it will be, golden brown. Okay, not golden brown as such, golden color. This is still sesame seeds, 2 to 3 tablespoon accordingly. आप कितनी ग्रेवी बनाना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है. This is good for 2 to 3 people. This gravy is good for 2 to 3 people, like 2 times सर्विंग के लिए. मैं ये लंच से डिनर में चाहिए तो रख के वी यूज़ द सेम समटाइम्स. तो दिस इज़ हाउ इट इज़. सो इसे मैं अच्छे से रोस्ट कर लूँगी. ये एक्चुअली हमारी ऑथेंटिक मेरे नेटिव की ग्रेवी है. To this I'm going to add some dry spice powders such as red chili powder, regular red chili powder, 1 teaspoon, and 1 teaspoon of Kashmiri lal mirch powder. You can extend the level of spiciness by adding 1 more teaspoon. Because my kids have the same gravy, that's why I'm just minimizing the spiciness. So it's just 1 teaspoon I have added, but you can add 1 more if you require. So this is haldi, this is turmeric, half a teaspoon. Give it a nice mix, roast it off, but don't burn it. And once it is cooled down, you can just put it in a mixture grinder and you can just make a paste out of this, and it will be ready to go with the gravy. Now I'm pre-boiling the meat. मैं इसको boil कर रही हूँ meat को. This is the meat. It is in water, turmeric powder and little bit of salt, just that. And I'm going to pre-boil this so that it's like soft, because I found out कि ये बहुत hard meat है. It was little bit harder than the regular one. That's why I felt like I should pre-boil it, then add to the gravy. So let's do that. Let's pre-boil this. By the time we'll do the rest of the ingredients as it is pre-boiling it. So in a pan, this is olive oil I have added. This is 1 whole onion, big one. I'll just make a saute out of it. Okay. Once it is golden brown, I will add ginger garlic paste, 1 tablespoon. So I'm not a great cook. I was always a working mother. So I have just started, like, it is a whole new thing for me. I have just started full-time cooking. I used to cook at home, but not full-time cooking. I never used to do all these gravies and all. Still, I'm a person who calls up mom and asks every now and then what is our native traditional recipes. If I want to, if I crave to have those kind of recipes, I normally call up my mom, my sister, and they are the one who give me tips and tricks, and they are the one who give me the recipes. So thanks to my family who is always supportive. And this is the ginger garlic paste what I have added, 1 tablespoon. Let's make it golden brown. Then to this I'll add 1 whole big tomato, chopped tomato.
So, as I was telling you that I'm not a great chef or great cook like other vloggers who are like put on the recipes. This is just my normal regular cooking. This is what the basic thing I do, and this is basic thing I know like cooking. So that's all. If you like my cooking, just let me know. But I know definitely it's something not unique or wonderful recipes. What I show you, this is normal, basic, routine recipes like how I am now at present. Otherwise, previously, I was the one who was a foodie who used to eat more outside because of my schedule. Like, I was all the time working. I used to come home very late, around 6 o'clock in the evening. Then I never had time to cook and all. That's why we used to go out and have whatever the dinner, or sometimes we used to cook at home. These are the potatoes. So I'll just fry them along with this. Like, you can say roast them a little bit so that the hardness is gone. So, as I was telling you, that it's very difficult now to manage the kiddo, like he is now 18 months old, and manage the whole house also, like vlogging all together. It's quite difficult, but I do it along with my daughters and my husband's help. They are very cooperative. They do understand, like, I was never into this. They know my whole situation. I was never a full-time housewife. Thanks to my family. Roast this potatoes well so that it is nicely cooked, not hard. To this I'm going to add some salt. So here we give a mix again, अच्छे से मिक्स हो जाए. और फिर हम इसमें ऐड करेंगे द पेस्ट what I had prepared, the mixture what I had prepared in the grinder. That paste will add to this. This is the paste I made out of the roasted one, the roasted onion and all. So give it a nice mix. Let the oil ooze up. Let this fry. Let the oil comes up on the surface. Till that you just have to just keep it on a medium flame. Cook it well. Once the oil oozes up, you can just cover the lid and cook. Then later add the water. So as I was telling, I am not a good chef, पर देखें वक्त और हालात आपको सब बदल देता है. जैसे जैसे टाइम गुजरता है, जैसे आप एक एक स्टेज में आ जाते हो लाइफ के, you come up in adulthood, then you get married, you have kids. Every step of life changes your way of life. Sometimes not. But mine was definitely changed a lot, especially after my second kid. It was like entirely a different routine. This is the coriander leaves, what I added. I have even added water to this to maintain the consistency, thickness. So yes, what I was telling you, this is kalonji, okay. This is black seed garnishing. Then I'll cover it up and it is good to serve. और हर दिन की तरह हमारी डेली रूटीन के लिए ज़रा हम आ गए बाहर फॉर अ वॉक एंड थॉट कि हम शौरमा खाएंगे. बहुत टाइम के बाद हम शौरमा खा रहे हैं. मेरे दोनों बच्चों को शौरमा बहुत पसंद है. द अरबिक शौरमा, नॉट द नॉर्मल मलबारी कैफेटेरिया वाला शौरमा, बिकॉज अरबिक शौरमा इज़ द ऑथेंटिक टेस्ट ऑफ शौरमा. बाकी सब जो केरलाइट शौरमा जो बनाते हैं उसमें वो देसीपन होता है. यू कैन नॉट फाइंड द रियल ओरिजिनल टेस्ट ऑफ शौरमा. और ये है एसएस बकेट बिरयानी, जो मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ. इनकी बिरयानी काफ़ी अच्छी होती है कंपेयर टू रेगुलर बिरयानी जो मिलती है यहाँ पे. दिस इज़ वन ऑफ द गुड वन. क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है. एक बकेट में 2 लोग आराम से खा सकते हैं. और ये देखें इनके कबाब, डोनर्स कबाब. दे हैव सो मच काइंड ऑफ डिफरेंट कबाब्स. और ये बना रहे हैं हमारे लिए शौरमा. दिस इज़ चिकन शौरमा एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स. इट्स अ ह्यूज पाइल ऑफ चिकन, boneless chicken.
Now he is going to shred the chicken for the shawarma. It is well cooked. बाकी सब छोटे छोटे शौरमा बनाते हैं जो कैफेटेरिया वगैरह वाले, तो वो टेस्ट नहीं होता। जितना आप ज़्यादा बड़ा शौरमा बनाते हो, जितना आप ज़्यादा क्वांटिटी बनाते हो, और जो सीरियन जो शौरमा बनाते हैं और रेगुलर मलबारी जो शौरमा बनाते हैं, उनका एंटायरली डिफरेंट होता है। और हमेशा की तरह हम यहाँ से जाएंगे घर पे और रिलैक्स चिल करके शौरमा खाएंगे, क्योंकि बाहर उतना अच्छा मौसम नहीं है। सो मैं हमारा व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।